From the following pairs of numbers, find the reduced form of ratio of first number to second number. Of first number to second number. फर्स्ट क्वेश्चन है 72,60. उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर 72:60 फाइंड आउट करना है. तो 72/60. अब तुम लोग सबसे फर्स्ट चेक करना है कि ये एक ही टेबल में जाता है या नहीं. 2 के टेबल में जाता है. 2 3s are 0, फिर 2 3s are और इधर रिमाइंडर 1 12 हो गया. 2 3s are 12, फिर 2 1s are 2 5s are 2 1s are 2 8s are. अब ये 3 के टेबल में जाएगा. 3 5s are 15, 3 6s are 18. So your ratio is 6:5. तो फर्स्ट इज टू सेकेंड रेशियो करना है तुमको. यहाँ पर बाकी और 2 क्वेश्चन है. चलो ये तुम लोग खुद करो. 38,57 एंड थर्ड 52,78. सेम इसी के जैसे कर रहे. फाइंड द reduced form of the ratio of the first quantity to second quantity. First one is 700 rupees, 308 rupees. तो यहाँ 700 rupees फर्स्ट क्वांटिटी है, 308 इज योर सेकेंड क्वांटिटी. तो हम इनको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको रेशियो उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट इज टू सेकेंड क्वांटिटी फाइंड करना है. तो 700/308. 2 से जाएगा ये सबसे पहले. 2 1s are 2 5s are और 2 4s are और ये 2 3s are 2 5s are एंड 0. फिर से वापस 2 से जाएगा. 2 7s are 2 7s are 2 1s are 2 7s are और 2 5s are. फिर यहाँ पर किससे जाएगा, 7 से जाएगा. हाँ 7 से जाएगा और 7 2s are 14, 7 5s are 35. अब ये आया तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो विच इज 25:11. अब देखो सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में बोला है 14 रुपीज एंड 12 रुपी 40 पैसा. अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक तो रुपीज है और दूसरा है 40 पैसा. तो पैसा छोटा टर्म है ना, तो छोटे में कन्वर्ट करेंगे. अब ये 14 रुपीज को भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, पैसे में. तो 14 इंटू 1 रुपीज में 100 पैसा है. तो 14 इंटू 100 विल गिव यू 1400 पैसे. ओके, फर्स्ट क्वांटिटी को हमने पूरी तरह से पैसे में कन्वर्ट किया. वैसे ही सेकंड क्वांटिटी है 12 रुपीज 40 पैसे. तो 12 रुपीज मींस 12 इंटू 100 प्लस दिस 40 पैसे. यहाँ 40 पैसे अलग से दिया हुआ है. तो 1200 प्लस 40 विल गिव यू 1240 पैसे. अब हमारा जो टर्म्स है वो एक ही यूनिट में हो गया. ये पैसे में होगा, ये भी पैसे में होगा. तो अभी डिवाइड करते समय इजी हो जाएगा. 400 डिवाइडेड बाय 1240. सबसे फर्स्ट तो एक 0 में कैंसिल कर देता हूँ. 2 से डिवाइड होगा. 2 6s are 2 2s are 2 7s are 0. फिर 2 से 2 3s are 2 1s are और 2 3s are और 5s are. 35/31 which is 35:31. अंडरस्टूड. अभी रिमेनिंग भी हम लोग उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे जैसे थर्ड वाला लीटर और मिलीलीटर में. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 लीटर 2500 मिलीलीटर. तो फर्स्ट वाले को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है. फोर्थ वाले में क्या दिया है, 3 years 4 months और दूसरा वाला टर्म दिया है 5 years 8 months. So you will convert this into months. Means 1 year में कितने months रहते हैं, 12 months. तो 3 into 12 plus 4 और 5 into 12 plus 8 और फिर उसके बाद रेशियो लेंगे. फिफ्थ वाले सम में 3.8 kg है और 1900 ग्राम है. तो इसमें छोटा कौन सा यूनिट है, ग्राम. तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. मतलब 3.8 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 kg is equal to 1000 ग्राम. दैट इज बाय 3.8 into 1000 is equal to 3800 ग्राम. और इसको 1900 ग्राम से फिर डिवाइड करेंगे. तो 3800 डिवाइडेड बाय 1900, दोनों जीरो कट. 19 1s are 19 2s are. तो 2:1 इसका आंसर है. सिक्स्थ वाले में 7 minutes 20 seconds
और 5 मिनट्स 6 सेकंड। तो छोटा वाला यूनिट कौन सा है? सेकंड। तो 7 मिनट्स मतलब 7 इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। 7 इंटू 60 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 420 प्लस 20 विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ Abha and her mother is 2:5, and the time of Abha's birth her mother's age was 27 years. Find the present age of Abha and her mother. So ratio of the ages of Abha and her mother is given, which is 2:. How much it is? 2:5. So let the common multiple be x. Let the common multiple be x. When the common multiple is x, then Abha's age will become 2x. Abha's present age is 2x, and her mother's present age will be 5x, because the ratio is given 2:5. So 2x and 5x. At the time of Abha's birth. Abha's birth means Abha's age should be taken as 0. Then her mother's age was 27 years. So what we are taking? 5x minus 2x is equal to 27. So 5x minus 2x is 3x. So x is equal to 27 divided by 3. So x is equal to 9. ये है common multiple. X is 9. तो Abha's age कितना है? 2x है. So Abha's age is equal to 2x, that is equal to 2 into 9, which is 18 years. And Abha's mother's age, we have taken 5x, which is equal to 5 into 9, 45 years. So you got both the ages, Abha's present age and Abha's mother's present age, which is 45 years. Vatsala and Sara are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4. तो यहाँ पर present ages are given. Present ages of Vatsala and Sara are given, and we have to find after how many years the ratio of their ages will become 5:4. That means we will take number of years as x. Number of years is equal to x. Now after how many years means we will add this x in their present ages. So present age of Vatsala is 14. We will add and write 14 plus x, and of Sara is 10. 10 plus x is equal to, we should get 5/4. Now what we will do? We will cross multiply this. So 4 into 14 plus x is equal to 5 into 10 plus x. 4 into 14 is how much? 56 plus 4x is equal to 50 plus 5x. Take this 4x with this 5x. It will become 5x minus 4x, and 50 will come here. 56 minus 50. So 5x minus 4x is x, and 56 minus 50 is 6. Therefore, how many years is required? 6 years is required. So your answer is 6 years. After 6 years, their present ages will become in the ratio 5/4. So the answer is 6 years. Question: the ratio of present ages of Rehana and her mother is 2:7.
after 2 years the ratio of their ages will be 1:3. What is Rehana's present age? Question is the ratio of present ages of Rehana and her mother is 2:7. After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. What is Rehana's present age? So, what is given ratio of Rehana and her mother age is how much? 2:7. So, what will take common multiple as x? Let the common multiple be x. So percentage of Rehana will be percentage of Rehana is 2x and percentage of her mother is 7x. 7x. Now after how many years? After 2 years. So we will add 2 in both of them. Age of Rehana will be how much? 2x plus 2 and age of her mother will be 7x plus 2. They have given the condition after 2 years the ratio of their ages will be 1:2. So ratio of these two 2x plus 2 upon 7x plus 2 is equal to 1/3. We will take cross multiplication over here. Is equal to 1 into 7x plus 2. So 3 into 2 6x plus 3 to the 6 is equal to 7x plus 2. Take this 6x on right side to 7x minus 6x and 6 minus 2. 6 minus 2 is 4 and this is x. So you get x as 4. But what is the present age of Rehana? We had taken as 2x. So 2 into 4 is 8 years. So this is your answer. The present age of Rehana is 8 years. Is using the property A upon B is equal to AK upon BK. Fill in the blanks with suitable numbers. So your first question in this is 5 upon 7 is equal to dash upon 28 is equal to 35 upon dash is equal to dash upon 3.5. Now what is multiplied to bring 28 in the denominator 28? How come it will become 28? 7 into 4. So multiply with the same number in the numerator. You will get answer as 20. Now 5 upon 7 gets converted into 35 upon dash. What is multiplied to get 35? 5 into 6. 7. That is the 35. So multiply the same number in the denominator. So 7 7 will get 49. Now what is multiplied to get 3.5? 0.5 is taken as a multiply. So here 0.5 से multiply किया, so what will be the answer? 2.5. Understood?